Yes, and now they will ask a code from you. Fill in this code that is in front of you, 18639203. Fill in this code 18639203. Right, fill in this code here. Fill in this code, hurry up. So this question of potentiometer is there in front of you. You can see that. Are you getting my point? What you are supposed to do? Type in Safari or Google Chrome. You type www.menti.com, menti.com, and fill in this code 18639203. Is this question visible to you? Now start voting. Whatever you think is the answer, what is the reason for a potentiometer giving one-sided deflection, you press that option and submit. Start polling. So let us see how many students vote and what are the results. Yes, one student has done. Others also do it quickly. Hurry up, hurry up. It's very simple, very easy. You can easily do this. What is the main reason for a potentiometer giving one-sided deflection? Yes, one student has answered. What about others? Hurry up, students. Yes, two students have done. Others can also do. Fill in this code 18639203. Or else what you can do is you can directly click on the link that I'll give you. Wait. You can directly click on the link also. I'm going to share with you. Yes, you can see this link. Click on it directly, you will reach there. One way of doing this is you can just click on this link and directly you can reach there. Yes, hurry up, start polling now. Start polling, students. Is the question visible to you? 3 students have done that. All others do this. Hurry up, hurry up. Yes, all of you do this. I want to see how many have read this. 1 minute more. That's enough. 4 have done. Menti.com, then fill in this code 18639203. That's it. This is what you are supposed to do. Very simple. 4 have done. What about others? So all are saying, all the 4 are saying that supply EMF is less than unknown EMF. Yes, this is the right answer. So supply EMF is less than unknown EMF. Yes, this is the right answer. किस किसने वोट किया था आप में से? With you, we were doing the exercise. So let's do that. Yes. मैम ये क्वेश्चन थोड़ा सा बता दो. हाँ जी, which question? मैम ये लास्ट क्वेश्चन मैम जो उनसे अपना अभी कराया. जो मैंने आपको दिया था. यस मैम. कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट. नहीं मैम, सप्लाई EMF वाला समझ नहीं आया वो. अच्छा ये वाला. देखो, I told you कि there can be 2 reasons for potentiometer giving one-sided deflection sometime. ठीक है, तो वो जो 2 reasons हैं उसमें से एक तो चलो वो side reason है कि connections may be of wrong polarity. But what is the main reason? Reason is that हम supply कम दे रहे हैं और जो unknown cell लगाया है उसकी EMF ज्यादा है, तो वो फिर कैसे ऑपरेट होगा?
अगर हम सप्लाई कम दे रहे हैं और अननोन सेल की ईएमएफ उससे ज्यादा है जितनी हम सप्लाई दे रहे हैं, हम सपोज 1 वोल्ट दे रहे हैं और अननोन सेल जो है वो लेक्लेंचे सेल है उसकी ईएमएफ 1.5 वोल्ट है, उस टाइम पे ये एरर आएगा, उस टाइम पे पोटेंशियोमीटर वन साइडेड डिफ्लेक्शन दे रहा हो, so we won't be able to find the balance point. Is that clear now? ओके मैम, सप्लाई ईएमएफ कम होएगी तब होना। हाँ, when supply EMF is less than unknown EMF, then it will be there. One-sided deflection will be there. Okay. Now let us see question number 3.9. Find current in each branch of network shown in this figure. Wheatstone bridge given है आपको, ठीक है? Distribute the currents first of all in your own way. Distribute the currents. ये आपने कंडीशन ऑफ सेंसिटिविटी में जैसे डिस्ट्रीब्यूट किए थे ना करंट्स, वैसे करिए. डू इट इन योर ओन वे. टेन वोल्ट, 10 ohm, 10, 5, 10. So we have to find current in each branch of this network. Find current in each branch of this network. ठीक है? So we will divide the currents first of all. Let us say total current flowing is I. Through this, let us take I1. Then through this branch current is I minus I1. Now this I1 will get divided into two parts. Suppose I2 flows here. Then I1 minus I2 will flow through this. And I2 and I minus I1 will get added up here. So I minus I1 plus I2 will be flowing through this branch. Plus I1 minus I2, again we get I. So this is first of all how we distribute the currents. Currents को distribute कर लो पहले, ठीक है? Now we will choose this loop first. Choose this loop. So write the equation 10I1 plus 5I2 minus 5I minus I1, and since there is no cell here, equal to 0. Right? So 10I1 minus 10I1 minus minus plus 5, 15I1 हो गया ये, plus 5I2 equal to 5I. So you can write I1 3I1 plus I2 equal to I. This is equation number 1. This is your equation number 1. Same way you can choose one more loop. Take this outer loop. ये वाली outer loop ले लीजिए, cell भी आ जाएगा इसमें. So you will write 5I minus I1 plus 10 I minus I1 plus I2 plus 10I equal to 10. This is what you get. So how many variables are there? There are 3 variables. एक equation और लेनी पड़ेगी आपको. There are 3 unknowns I, I1 and I2. So by now we have written 2 equations. One more equation you have to take. ठीक है? Let us solve this first. 5I plus 10I, 15I plus 10I, 25I. Minus 5I1 minus 10I1 minus 15I1, then 10I plus 10I. Okay, ये 10I था, तो ये हो गया plus 20I equal to 0. So from here we get 3I minus 3I उधर ले जाइए, उस साइड पे ले जाएंगे 3I को. So we can write 3I equal to 4. ये हमारा क्या था? ये I1 था. 3I1 minus क्या हो रहा है? This was I2 minus 3I2 is equal to 4I. Yes, now it's correct. So this is your equation number 2. This is your equation number 2.
So now what we can do is we can compare, eliminate I from equation number 1 and put in equation number 2. अब ये I की वैल्यू 2 में पुट कर दो, ठीक है, देखें क्या आता है. And take one more loop here. After solving, you can find currents through different branches. Yes, solve it just now. Hurry up. Solve kariye and tell me the answer. What you are getting. So the third loop would be 5I2 plus 10 I minus I1 plus I2 minus 5 I1 minus I2 equal to 0. Excuse me, ma'am. हाँ, यहाँ पे देखो ये 5I 10I 5I 10I ये 25I ही आएगा. हाँ, ये आई एम रीराइटिंग दिस इक्वेशन. 25I minus 5 minus 10 ये हो गया minus 15I1 plus 10I2. अब ये ठीक है इक्वेशन. तो आपकी ये इक्वेशन बनेगी अब 10I2 minus 15I1 equal to 25I. ठीक है, minus 25I, उसको हम इधर एडजस्ट कर लेते हैं. So you get finally 3I1 minus 2I2 equal to 5I. This is your equation number. Is that correct, Vidisha, now? Vidisha, is it okay now? Yes, ma'am. चलो अब ये तीन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है बिकॉज देयर आर 3 अननोन्स, तो यू नीड एटलीस्ट 3 इक्वेशंस टू सॉल्व. So you will find I1 and I2 current through different branches. You can find them. ठीक है, चलिए. So I'm going to share the next question with you. Let us see the next question now. Yes. So 3.10 is in a meter bridge. Balance point is found to be at 39.5 centimeter from end A when the resistor Y is of 12.5 ohm. Find resistance X. Why are the connections between the resistors in a Wheatstone or meter bridge made of thick copper strip? Yes, what is the reason of this part? Why are the connections made up of thick copper strips? To maintain resistance of the wire. So that resistance does not exceed, to minimize the resistance. R is equal to rho L by A. So if area of the strips is more, less resistance of the circuit will be there. चलिए, तो यहाँ पे अब फॉर्मूला लगाइए. S is equal to 100 minus L upon L into R. ठीक है, where what is S? Unknown resistance आपका X है, known resistance capital R आपका Y है, and your balance point L is 39.5 centimeter. Okay, can you see this figure? 3.27 कहाँ पे है? उसमें X लेफ्ट साइड पे है कि राइट साइड पे? प्लीज चेक इट आउट. 3.27 फिगर देखिए कहाँ पे है. Yeah, this is 3.28. Yes, this is figure 3.27. But where is X and where is Y? यहाँ पे तो R और S ही लिया हुआ है इन्होंने. They have taken R and S, but in the question they have mentioned X and Y. Okay, तो चलो अब Y को आप फिर नॉन रेजिस्टेंस मान के ही चलिए और X निकालिए. So your formula will become X is equal to 100 minus L over L into Y. So put in the values also. Let me note down the values.
Y is 12.5. X we have to find and L is 39.5 centimeter. Yes, Shivam. हाँ बोलो. मैम वो बुक में आर और एस सी है हमारा. आर और एस भी है ना, हमें वैसे ही इन्होंने एक्स और वाई दी है. चलो फिर अब हिट एंड ट्रायल है, हम ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं. नहीं मैम, क्वेश्चन में भी हमारे आर और एस सी है. क्वेश्चन में आर और एस है, बट इन माय हाँ बुक जी मैम. इट्स एक्स एंड वाई. तो 12.5 क्या है, आर है कि एस है? एस है मैम, नॉन Yes. रेजिस्टेंस है. अच्छा चलो, ये एस है तो आर आपने कैलकुलेट करना. सो यूज दिस फॉर्मूला, एस इज 100 माइनस एल ओवर एल इनटू आर. So that is very clear now. Put in the values and solve for this. So your R is here and S is here. You have to take care of the order. अगर आप ऑर्डर रिवर्स कर दोगे तो ये 100 माइनस एल और एल का डिफरेंस आ जाता है. Okay. So solve for this. Let us see the next part. Next part is determine balance point of the bridge if R and S are interchanged. तो वो भी हम कर लेंगे. C part, what happens if galvanometer and cell are interchanged at the balance point of the bridge? Would the galvanometer show any current? तो इसमें क्या होगा कि if galvanometer and cell are interchanged at the balance point, no effect will be there on the balance point. So still it will be showing null deflection. So in the second case, in the B part, you will interchange R and S. So R is equal to 100 minus L over L into S. Then this equation will become. So accordingly, you can find the balance point L now. Now this balance point will be different. Let us call it L dash. So you have to find this balance point then. Find this balance point. Okay, fine. चलिए ये हो जाएगा. Let us see in the next question. बैलेंस पॉइंट चेंज होगा. Yes. क्या? बैलेंस पॉइंट चेंज होगा. हाँ, बी पार्ट में चेंज होगा. अब आपका तभी हमने उसको एल डैश बोला है ना. सो आई टोल्ड यू कि दिस ऑर्डर मैटर्स अ लॉट. अगर आप नोन और अननोन रेजिस्टेंस को इंटरचेंज करते हो तो यस, बैलेंस पॉइंट विल बी चेंज. ओके गितेश? ओके मैम. Okay, now see 11th question. A storage battery of EMF 8 volt and internal resistance 0.5 ohm is being charged by a 120 volt DC supply using a series resistor of 15.5 ohm. What is the terminal voltage of the battery during charging? What is the purpose of having a series resistor in the charging circuit? तो इसमें आप देखिए, let me note down the values first. Storage battery of EMF 8 volt and internal resistance 0.5 ohm is being charged by a 120 volt DC supply using a series resistor of 15.5 ohm. What is the terminal voltage of the battery? What is the purpose? तो ये बनेगा आपका. अदरवाइज अब आपकी इक्वेशन होती है I इज इक्वल टू V ओवर R या E ओवर R, है ना. यही होती है ना आपकी इक्वेशन. तो हियर सिंस इट इज चार्ज्ड विद द हेल्प ऑफ अनदर बैटरी, तो V इज जो नेट आपकी EMF आएगी E माइनस V है. नेट EMF आपकी होगी E माइनस V. तो इनका डिफरेंस लोगे आप जो चार्जिंग हो रही है. So then you will use V terminal voltage V is equal to IR. This I into R. Excuse me, ma'am. हाँ जी बोलो. मैम इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो ऐड होएगी. Yes. आपको पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा. Yes.
एक्चुअली चार्जिंग में क्या होता है, अदरवाइज हमारे पास रिलेशन होता है V इक्वल टू E माइनस आई आर। ड्यूरिंग चार्जिंग टर्मिनल ऑपोजिट वे में कनेक्ट होते हैं तो ये हो जाता है E प्लस आई आर। एक्चुअली दिस हैपेंस, तो आपका जो I है वो फिर हो जाएगा V माइनस E ओवर R। इफ वी टॉक अबाउट द सेल अलोन, आप ऐसे ही करिए। तो चार्जिंग में आप नोट कर लीजिए कि कनेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में हम चार्ज कर रहे हैं उस सोर्स को, अदरवाइज वो सोर्स करंट गिव आउट करता है। यहाँ पे ये खुद चार्ज हो रहा है, तो E माइनस आई आर के बजाय यहाँ पे E प्लस आई आर आ जाएगा। सो योर I विल बी V माइनस E ओवर R। दिस इज योर V। So calculate the current 120 minus 8 over the internal resistance. ठीक है, ये आ गया 112 into 2, that is 224 ampere. And after that you can find the terminal voltage. So the terminal voltage is this current into the external resistance. आंसर बताओगे पीछे क्या लिखा हुआ है? टर्मिनल वोल्टेज पहले फाइंड आउट करिए कितनी आ रही है। 224 इंटू 15.5 कितना आ रहा है? ठीक है, करंट आप वैसे निकाल के देख लो, टोटल ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस, एंड आफ्टर दैट वोल्टेज आप V इज इक्वल टू E प्लस आई आर से निकालो। हाँ जी, नाउ व्हाट इज आंसर? व्हाट आंसर यू आर गेटिंग नाउ? हाँ जी बच्चे, क्या आंसर आ रहा है? चलो आप ट्राई कर लेना। सी क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। In a potentiometer arrangement, a cell of EMF 1.25 volt gives a balance point at 35.0 centimeter length of the wire. If cell is replaced by another cell and balance point shifts to 63 centimeter, what is the EMF of the second cell? So this is to compare EMFs of two cells. Simple formula, E1 over E2 is equal to L1 over L2. So we'll be using simple formula here of that application. E1 upon E2 is L1 upon L2. So your E1 is 1.25 and E2 we are to find. Your balance point first it was 35 and later it is 63. So solve this and you will find E2. Solve this and find E2 now. तो यहां से आपके पास E2 आ जाएगा। हम 2.25। हाँ जितना भी आ रहा है ठीक है। अब ये एडिशनल एक्सरसाइज रह जाएगी, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट अस सी क्वेश्चन 3.13। द नंबर डेंसिटी, the number density of free electrons in a copper conductor estimated in 3.1 is this. How long does an electron take? 128. A steady value of 2.88. What is the steady temperature? 1 minute. The number density of free electrons in a copper conductor estimated in example 3.1 is 8.5 into 10 raised by 28
per meter cube. How long does an electron take to drift from one end of a wire 3 meter long to other end? Area of cross section of the wire is 2 into 10 raised to minus 6 meter square and it's carrying a current of 3 ampere. ठीक है, चलिए, let me note down the data first. You have done the concept of drift velocity. तो number density दी हुई है 8.5 into 10 raised to power 28 per meter cube. How long, मतलब टाइम निकालना है आपको. लेंथ ऑफ वायर इज 3 मीटर. टाइम यू हैव टू फाइंड and area of cross section is 2 into 10 raised to power minus 6 meter square. Current is 3 ampere. Yes, this is the data. And question 3.1, let's have a look. Okay. All right. So, how will you solve now? आपको टाइम निकालना है ना. टाइम क्या होता है? डिस्टेंस ओवर स्पीड. लेंथ ऑफ कंडक्टर इज द डिस्टेंस ओवर स्पीड. विच स्पीड? दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी यू विल कैलकुलेट I is equal to E in VD से. यहाँ से कैलकुलेट करोगे आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी फर्स्ट. So I over A and E. Solve for this. Number density is given. Okay. Number of electrons per unit volume is given to you. ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए आपका टाइमर. So solve for this and tell me what is your answer. Yes, solve this. बताइए कितना आंसर आ रहा है. कितना आंसर आया गितेश? यस, हैव यू सॉल्व? चलो ये कर लेना. टुमारो वील कंटिन्यू विद द additional exercise. So please keep the books with you.